Hello बच्चों, welcome back to the Tantra Physics classes. And presently we are doing lectures on Newton's laws. And today's lecture is on rocket equation. मैंने पहले भी आपको rocket equation पर एक lecture दिया था, but that lecture was not that of a good standard. And today I will deliver a lecture on rocket equation, and there I derived the equation on the basis of Newton's law from the ground. But today I will derive the equation in space, instantaneously in space. When the rocket is moving with velocity v, I will catch it up somewhere and then I will write the equation there. Instantaneous. And what I am going to find in the rocket equation, first of all, thrust on a rocket by the ejection of gases, the mass that it releases with some velocity related to the rocket. Number one, thrust I will find. Number second, I will find the acceleration of the rocket due to the ejection of gases. And number third, I will find the velocity, instantaneous velocity of the rocket when it ejects the gases after time t. So these are the three things that I am going to find. But I will find these three things, thrust, acceleration and velocity of the rocket in gravitational free space. I will not take gravitation into consideration. But later on, if you want to get gravitation also into the equations, or gravitation also you take into the account, then I will tell you why to put the acceleration due to gravity, why to put the gravitational constants, why to put the gravitational quantities. It's very easy afterwards when we build up the equations in gravitation free space. और बाद में क्या करना है, सिर्फ ग्रेविटी का जो कांस्टेंट्स है उनको ही कहीं पुट करना है, and we will understand why to put it. It's very easy if you understand the things. Okay, rocket equation. Suppose this is the rocket in the space and it moves instantly with velocity v. इसका velocity v है. The rocket है, it has a velocity v at any time in space. Okay, at time t is equal to 0. At time t is equal to t. And now, suppose the mass of the rocket is m, and I want to derive the expression for the rocket equation in the frame of reference of the rocket. In the frame of reference of the rocket के frame में ही मैं equation derive करूँगा. Although you can also derive the equation for the person at rest. इसके लिए भी आप equation derive कर सकते हो, और जो रॉकेट के अंदर अगर मैं एक इमेजिन करूँगा पर्सन है उसके लिए भी. रॉकेट के अंदर जो पर्सन है उसके लिए रॉकेट रेस्ट में, उसके लिए ये वेलोसिटी 0 है. सो इन द फ्रेम ऑफ द रॉकेट, this velocity is 0. It has velocity, rocket has velocity, but for a person, this person on the ground, and the rocket does not have any velocity for a person inside. And I want to solve the rocket equation. I want to build up the rocket equation for a person inside. But of course, ये person जो रॉकेट के अंदर बैठा है और ये person, they will derive the same equation. So equation में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आसान होगा क्योंकि this v is 0 for the person inside. मैं फिर से रिपीट करूँगा. A person inside the rocket, for him the rocket is at rest because he is moving with the rocket, and for this person rocket is moving with velocity v. At time t, what happens? The rocket ejects gas in the backward direction, suppose dm, and it gives a push to the rocket in the forward direction, and this push increases its velocity by dv. इस पर्सन के लिए इस रॉकेट का वेलोसिटी है v plus dv.
इस पर्सन के लिए इस रॉकेट का वेलोसिटी आगे की ओर v प्लस dv, लेकिन फॉर ए पर्सन इनसाइड इट हैज़ ओनली दिस dv वेलोसिटी, ये v है नहीं, dv वेलोसिटी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड द गैस आर इजेक्टेड बैकवर्ड्स विद ए वेलोसिटी vr, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दीज गैसेस विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन इनसाइड। जो अंदर वाला पर्सन है वो कह रहा है कि ये जो गैस इजेक्ट हुआ इसका वेलोसिटी vr है, बस दैट इज ऑल। जो अंदर वाला पर्सन है ही विल से द रॉकेट हैज़ गॉट फॉरवर्ड वेलोसिटी dv एंड इजेक्शन गैसेस है वेलोसिटी vr। ये बैकवर्ड भी हो सकता है, ये किसी और डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये गैस कैन बी इजेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन। In short, the rocket is losing the mass. It is losing mass, and it has lost mass dm in time delta t, in small time. Okay. Now, what is initial momentum of the rocket for a person here? P1. That is 0, because rocket is at rest for a person inside. And conservation of momentum is valid for both, for this person inside and for this person. And I am making the conservation of momentum for which person? For the person inside. Now, this P1 is equal to 0 when there was, when the gas were not ejected and rocket was not getting any additional velocity in the forward direction. Now, what is P2? After time delta t या dt. P2 is equal to, ये जो dv का वेलोसिटी है ये किस मास का वेलोसिटी है? ये रॉकेट का वेलोसिटी है, एडिशनल वेलोसिटी दिस, मगर हाउ मच मास हैज़ गॉट दिस dv वेलोसिटी? dm मास तो गया, तो बाकी जो रॉकेट का मास है दैट इज m माइनस dm इंटू dv, दिस वन, प्लस vr इंटू dm। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं माइनस वी आर डी एम। वो गलत बात है, वो इसलिए गलत है, हाउ डू दे नो द गैस आर इजेक्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन? हमने वेक्टर कर दिया, दैट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। वेक्टर करना काफ़ी है, ये माइनस लिखना ठीक नहीं है। माइनस लिखने का मतलब यह है कि आपने ये समझ लिया कि आपने गैस इधर की ओर इजेक्ट की है, लेकिन गैसेस किसी के डायरेक्शन में इजेक्ट हो सकते हैं। वो डेल्टा वी आर जो वेक्टर है दैट विल टेक केयर ऑफ इट। सो अकॉर्डिंग टू द मोमेंटम कंजर्वेशन व्हाट शुड यू राइट? मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या इक्वेशन लिखेंगे हम? शाबाश, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन? द मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन इज दैट इज p1 vector is equal to p2 vector, because there are no external forces, it is in gravitational free space. So I will write m minus dm into dv प्लस vr dm, वो p2 है, this p2 is equal to p1 that is 0. So this momentum is equal to this momentum because momentum is conserved. Now it will give you m dv minus dm dv plus vr dm is equal to 0, right? Okay. Now second order terms are neglected. That is dm dv is neglected because it is very small quantity into small quantity is neglected. So what should I write? m dv plus vr dm is equal to 0, right? Okay, now that implies m dv is equal to minus vr dm. ठीक, now dv equal to minus vr dm by m. ये है dv का इक्वेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखने की जरूरत है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट
आफ्टर सम टाइम, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट आफ्टर सम टाइम, तो वो कैसे आप निकालेंगे? लेट mi be the initial mass of the rocket, and mf mass of the rocket, mass of rocket at any time. वो मतलब यही देखो, जब ये रॉकेट शुरू हो जाता है, गैस इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो रॉकेट का जो मास है वो कम होता जाएगा और आखिर में इसका मास बहुत ही कम होकर के, तो बिकॉज इट इज इजेक्टिंग गैसेस, तो इनिशियल मास कुछ ज़्यादा होगा और फाइनल मास कुछ कम होगा. ठीक. सो इस इक्वेशन 1 को मैं थोड़ा आगे ले जाऊंगा. आई वॉन्ट टू गेट दिस इक्वेशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम. तो dv इक्वल टू दैट इज माइनस vr dm by dt, dm by m, sorry, integrating both sides. Let me suppose initial velocity is u of the rocket, जब लॉन्च करोगे अर्थ से, velocity after some time is v and initial mass is mi, because ये तो initial mass is mi and final mass is mf, because these symbols stand for initial and final. It is very easy to remember. तो यहाँ v under what limits? u and v is equal to minus vr, yes, it is ln of m, ln to the base e, m under limits mi and mf, right? So it is v minus u is equal to minus vr ln of पहले mf minus ln of mi. ठीक. ये हुआ v is equal to, u को यहां ले जाइए, minus vr ln of mf by mi. ठीक. मगर mi ज्यादा है mf से, इसलिए ln of mf by mi नेगेटिव क्वांटिटी होगा, बिकॉज इट विल बी ln टू द बेस e लेस देन 1. तो जो लेस देन 1 होता है वो नेगेटिव आता है, वो इसके साथ पॉजिटिव हो जाएगा. तो इसलिए मैं इसको आई विल पुट इट दिस वे, v इक्वल टू u प्लस vr, इट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट फ्रॉम द ग्राउंड, ln ऑफ, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, तो क्योंकि इसीलिए यह प्लस हो जाएगा. आगे ln ऑफ mf by mi इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ln ऑफ mi by mf. तो वो नेगेटिव जो यहां से निकलेगा वो इसके साथ पॉजिटिव होगा, तो ln ऑफ mi by mf. दिस इज द इक्वेशन फॉर द रॉकेट वेलोसिटी. तो ये डिपेंड करेगा आगे जाकर कितना मास कम हुआ. इनिशियल मास कितना था रॉकेट का, अंदर उसमें कितना मास था, और आखिर में आफ्टर सम टाइम इसका मास कितना रिड्यूस होगा. तो ये रेशो पर डिपेंड करेगा. इनिशियल वेलोसिटी प्लस समथिंग, इसका मतलब ये प्लस समथिंग जो है, दिस एडिशनल वेलोसिटी हैज बीन क्रिएटेड बाय द इजेक्शन ऑफ गैसेस बाय द रॉकेट. जो रॉकेट इजेक्ट गैस करता है उसकी वजह से इसको ये एडिशनल वेलोसिटी मिलता है. अदरवाइज आपने इसको ग्राउंड से u वेलोसिटी से लॉन्च किया था, जो एडिशनल वेलोसिटी मिला वो इजेक्शन की वजह से मिला. सपोज मास चेंज होगा ही नहीं, लेट मी सपोज अगर मास चेंज ही नहीं होगा, mi by mi दैट इज ln 1 दैट इज 0, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू u इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस. इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द वेलोसिटी विद व्हिच यू लॉन्च इट. अगर ग्रेविटेशन आपने एब्सेंट कर दिया, so there is no force to reduce its velocity. So this is a very great equation in gravitational free space. Gravitational free space. अच्छा, अगर मैं इसको चलो इक्वेशन 2 कर दो, इसको, इट इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन कर दो. सपोज मैं ग्रेविटेशन को भी ऐड करूं,
Suppose I say this rocket is launched from the surface of the earth, it goes up and up by the ejection of gases. So ejection of gas will increase its velocity, and you have initial velocity u, but ejection of gas will increase its velocity. But there is an agent of gravitation which will reduce its velocity, as you know. As somebody goes up or some object goes up, the gravitation acts downwards and therefore its velocity reduces because of gravitation acceleration. तो इसको अगर मैं gravitation में लाऊं, इसी इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को ग्रेविटेशन में ला करके कहाँ मैं चेंज करूँगा? Why should I change? V equal to, yes, U plus VR, velocity of the relative velocity of the ejection of gases. जो रॉकेट गैस इजेक्ट करता है उसका वेलोसिटी क्या है विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, और उसका वेलोसिटी क्या है विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इनसाइड द रॉकेट, दैट इज VR. ठीक. अच्छा, ln ऑफ mi बाय mf. तो अब मैं क्या करूं भाई? वैसे मुझे बताइए, ग्रेविटेशन से वेलोसिटी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? बताइए. डिक्रीज ही होगा. माइनस GT आंसर, माइनस GT. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू टाइम. ये टर्म जो है इट विल रिड्यूस द वेलोसिटी. अगर इजेक्शन ऑफ गैसेस है नहीं, एक स्टोन ऊपर जा रहा है या रॉकेट ही ऊपर जा रहा है जो इजेक्शन गैस करता नहीं, mi इक्वल टू mf, ये पार्ट जीरो हो जाएगा. u माइनस GT, दैट इज व्हाट यू नो already. In presence of gravity you know the equation, that is u minus GT. तो इसीलिए मैंने कहा कि once we incorporate gravity, we know why to put GT. That is very easy. Once you know the physics, you can understand मैं कहाँ ये GT put करूँगा. It has to be negative GT. अब ये नहीं कि मैं I am going to derive it for in presence of gravity. अब derivation की बात ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ GT लिखना है. So in when gravity is present, when gravity is present. अच्छा, तो अब जो अर्लियर इक्वेशन जो मेरे पास था, ये तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकला, एज ए फंक्शन ऑफ मास भी आप कह सकते हो. तो अब मैं और एक इक्वेशन लेता हूँ, वो वाला, ये वाला इक्वेशन पिकअप करता हूँ. ये वाला इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, dv इज इक्वल टू माइनस VR dm बाई m. तो इस इक्वेशन को लेकर के मैं और एक चीज़ करता हूँ, देखते हैं. इट इज dv इक्वल टू माइनस VR dm बाई m. नाउ आई विल डिवाइड बाय टाइम बोथ साइड्स. डिवाइडिंग बाय टाइम, डिवाइडिंग बाय dt. सो इट इज dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस VR, ये m नीचे रखो इधर, और यहाँ करो dm बाई dt. दिस इज द रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ मास in the form of gases or in any form, ejection of mass from the rocket, dm by dt. How much mass is ejected in 1 second? एक सेकंड में कितना मास इसने इजेक्ट किया बाहर की ओर in 1 second at a velocity of VR with respect to rocket itself. तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन, माइनस VR by m dm by dt. एक्सेलरेशन मिला. So that means ये जो dm by dt है, ejection of gases from the rocket, it creates acceleration of the rocket. A. ठीक? मगर this m is the mass of the rocket, instantaneous mass in space. It is not the initial mass. It is not even the final mass. It is mass at any time, when, at any point in space. It is instantaneous mass. तो ये mi के बराबर तो होगा नहीं, ये mi से कम होगा. जो इनिशियल मास होता है उस मास से ये कम होगा. अच्छा, ये तो हो गया एक्सेलरेशन. दिस इज द एक्सेलरेशन कॉज्ड in the rocket by the ejection of gases. Can you tell me how much is the thrust on the rocket? Thrust means force. How much is the force on the rocket by the ejection of gases? हाँ, easy. ये m को इधर लाओ, वो force हो जाएगा. ma. So thrust on the rocket, it is the acceleration of the rocket. ये अच्छा इक्वेशन है, इसको कर दो सेकंड इक्वेशन, इसको कर दो थर्ड इक्वेशन. Right? It is the acceleration of the rocket due to the ejection of gas. If the gas are not ejected, dm by dt is 0. There is no acceleration due to the thrust.
because there is no ejection of gas in the backward direction or in any other direction. हाँ, यह बात ज़रूर है कि acceleration is opposite to the ejection velocity VR. अगर गैस मास ऐसे इजेक्ट होगा तो वेलोसिटी इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस एक्सेलरेशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये नेगेटिव इसीलिए आया यहाँ पर. एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड गैसेस. जिस डायरेक्शन में गैस रॉकेट गैस इजेक्ट करता है, एक्सेलरेशन रॉकेट का उसके अपोजिट में होता है. वो इसे क्लियर हो जाता है. अब मैं m को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा. जब मैं m मल्टीप्लाई करूँगा मुझे यह मिलेगा, मुझे यहाँ ऐसे मिलेगा एम ए इज इक्वल टू, ये m को मल्टीप्लाई करो, माइनस वी आर डी एम बाई डी टी. दिस इज थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, दैट इज माइनस वी आर डी एम बाई डी टी. ये जो थ्रस्ट है जो इस रॉकेट को मिलता है फॉरवर्ड या किसी डायरेक्शन में, ये गैस इजेक्ट की वजह से होता है. कितना होता है? वी आर velocity of the ejected gases with respect to the rocket itself, not with respect to the ground. dm by dt, the rate at which the mass is ejected. एक सेकंड में कितना मास बाहर इजेक्ट हो जाता है. ठीक, अच्छा, ये भी ठीक बात है. ये सब हमें अब समझ आ गया. तो अब मुझे बताइए, इट इज एक्सेलरेशन. इट इज एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट? इट इज एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इन फ्री स्पेस. Free space. It is thrust in the free space. Now, tell me, what is acceleration in the gravitation? What is acceleration of the rocket in gravitational space? While you don't neglect gravitation, while you have gravitation also. So, how can you write down the equation in presence of gravitation? In presence of gravitation. दे देखिए, A is equal to minus VR by M, velocity of the ejected gases with respect to the rocket itself, divided by mass of instantaneous mass of the rocket, dm by dt. ठीक, this is the acceleration of the rocket due to the ejection of gas. वैसे जब dm by dt को नेगेटिव करोगे because of the ejection mass decreases, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. मतलब कि एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा. इस रॉकेट का एक्सेलरेशन, इस रॉकेट का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा. अगर ये गैस ऐसे इजेक्ट हो जाता है, अगर ऐसे गैस इजेक्ट होता है तो A विल बी पॉजिटिव बिकॉज dm बाई dt विल बी नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा. ये क्लियर है कि अगर इस डायरेक्शन में गैस इजेक्ट होता है तो एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा. चलो, अब मुझे बताइए व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन इन द ग्रेविटेशनल स्पेस. कुछ भी नहीं, यहाँ जी करना है नेगेटिव आंसर. Where there is gravitation also, where there is gravitation. अगर ग्रेविटेशन भी है, ये नेगेटिव होगा, मतलब G is this way, ये this A is up. अब ये नहीं समझना है कि भाई देखो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, बोथ आर डाउनवर्ड्स. नो, दिस इज अप बिकॉज dm by dt इज नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, G नेगेटिव रहेगा. And what is force on the rocket in the gravitational space? वहां पर भी आप जो thrust अभी निकाला आपने, अभी जो thrust निकाला Ft, what was that? That was minus Vr dm by dt. ये thrust हुआ था ना. तो अब बताइए टोटल फोर्स इन ग्रेविटेशनल स्पेस. एक तो है thrust जो अभी हमने निकाला ड्यू टू द इजेक्शन ऑफ गैसेस, माइनस mg आंसर. अब mg तो हमेशा ऐसे ही होगा, डाउनवर्ड्स इन द ग्रेविटेशन ऑन दिस रॉकेट. और ड्यू टू इजेक्शन ऑफ गैसेस जो है, इसका जो थ्रस्ट है Ft वो ऊपर की ओर होगा. अब आप ये नहीं कहना है कि सर दोनों नेगेटिव है, ये नेगेटिव रहेगा ही, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाएगा dm by dt का अपना नेगेटिव होने की वजह से, बिकॉज दिस इज द इजेक्शन ऑफ गैस एंड दिस इज नेगेटिव बिकॉज मास ऑफ द रॉकेट डिक्रीजेस विद टाइम. तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस है जो हमने डेवलप. दिस इज ऑल अबाउट रॉकेट. तो बेस इक्वेशन लिखना है, बस उसी बेस इक्वेशन से सारा कुछ फिर अलग अलग निकलता है. लेकिन एक बात ज़रूर है कि फिर जब ग्रेविटेशन आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, व्हेन यू गेट ग्रेविटेशन इनटू द पिक्चर, यू शुड नो व्हाई टू पुट द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स लाइक g,
कहाँ रखना है, यहाँ देखो फोर्स पता लगना चाहिए कि अगर ये थ्रस्ट है ऊपर की ओर तो mg कहाँ रखूँगा इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक, नाउ लेट मी गो टू द फ्यू एग्जांपल्स एप्लीकेशंस। ये जरा देखिए, नंबर 1 एप्लीकेशन मैं बनाता हूँ कुछ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये है एक रॉकेट, ये रॉकेट है और दिस इजेक्ट्स गैसेस। Should I make it in the gravity? Okay, let me say it is a gravitational free space. There is no gravity. It's quite in gravitational free space. So it is emitting gases dm by dt is equal to minus k. Let me suppose it is minus k. And it is initial velocity is u. Initial velocity t is equal to 0 पर ये velocity है u. ठीक, मुझे बताइए what should be its velocity after time t. After time t, what should be its velocity, and if it is initial mass is m0. Initial mass, पहले जो mass था वो m0 था initially. At t is equal to 0, its mass is m0. सोचो जरा, you are launching a rocket. I want to put it as simple as possible. It is a rocket, its mass is m0, and this mass contains anything, everything. And it may be a solid fuel, it may be a liquid fuel inside this rocket, and its mass is m0, and the gas start ejecting out dm by dt. How much mass is ejected in 1 second? Dm by dt, that is mass ejected in 1 second in kgs is minus k. Maybe that is constant k. Minus k वजह यह है कि because gases are being ejected. तो मुझे निकालना है what is the velocity after some time. So what is your formula for velocity in gravitational free space? That is v is equal to u initial velocity plus vr, and gases are ejected at velocity vr, relative velocity. Okay, vr, and what was here? Yes. Okay, just a minute. We are ln of mi by mf without this gt. gt के बगैर, हाँ, it was u plus vr ln of mi by mf. Ln of mi by mf, ये है हमारा इक्वेशन। अब सोचो जरा, हाउ कैन यू डू दिस क्वेश्चन? इनिशियल मास दिया है, फाइनल मास नहीं दिया है, आफ्टर टाइम टी आपके पास मास नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी u है, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम? सोचो जरा इसके बारे में। चलो जस्ट ये v है, u होना ही चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी u है वो होना ही चाहिए, vr भी होना चाहिए, ln ऑफ ये mi क्या है? m0. What is mf? What is mf? Mass after some time. What is mass after some time? T. Shabash. That should be m0 minus something. What minus? Minus kt. Why kt? Because you see, when the rocket ejects the gases, what is the gas ejected in 1 second? That is k. How much is the gas ejected in time, given time t? That is kt. तो जो नीचे वाला mf मास है, मास आफ्टर सम टाइम, वो ये होना चाहिए, mf should be equal to how much? m0 minus how much gas has been ejected in given time t. वो बताओ जरा। 1 सेकंड में dm by dt का मास चला जाता है, तो टाइम t में कितना मास चला जाएगा? dm by dt, ये 1 सेकंड में मास गया, तो t सेकंड्स में कितना जाएगा? dm by dt, t इज इक्वल टू kt, तो माइनस kt करना पड़ेगा। आंसर, दिस इज द आंसर, सो सिंपल।
The velocity of the rocket after some time is, that is u plus vr ln of mi by mf. Mi you know, that is initial mass. mf you have to find. How can you find? You know, एक सेकंड में कितना मास बाहर जा रहा है. अगर एक सेकंड में इतना मास बाहर जा रहा है जितना दिया हुआ है, तो आफ्टर टाइम टी कितना मास पूरा बाहर जाएगा. तो आपको इनिशियल मास माइनस वो अमाउंट मास निकालना पड़ेगा ताकि आपको mf मिलेगा. लेट मी गो टू द सेकंड एग्जांपल. चलो मैं बनाता हूं. ये है रॉकेट. ये है रॉकेट. Oh, it ejects gases dm by dt. Okay, it ejects gas at the rate of dm by dt with velocity, okay, vr, and it is initial velocity is 0, let me suppose. And बताइए what is velocity after some time t of this rocket? ठीक, in gravitational free space g is 0. This is what I assume. After all, you say when a rocket is launched from the ground, तो gravitation तो होगा ही होगा. लेकिन हम assume करते हैं gravitation force is weak force and the ejection of the gas is such that it makes the gravitation negligible. इतना blast होता है ऊपर की ओर gases की वजह से, इतना ejection होता है कि इतना acceleration होता है कि g का acceleration जो है 9.8, that is negligible. Otherwise gravitation is always present. हाँ, so if I suppose mass, मैं यहां बनाऊंगा ऐसे. Find the velocity of the rocket when its mass reduces to half. जब आप रॉकेट को लॉन्च करते हो, उसका मास कुछ होता है, तो आगे आगे इसका मास कम हो जाता है. मुझे उस पोजीशन पर इसका वेलोसिटी निकालना है जब इसका मास हाफ द इनिशियल मास होगा, आधा हो जाएगा इसका मास, तो तब उसका वेलोसिटी क्या है. इनिशियल वेलोसिटी यूज समझो. अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही हमने समझ लिया, चलो ठीक है. तो मैं यहाँ कर दूंगा इस स्पेस में, इस प्रॉब्लम को करूँगा मैं. अच्छी तरह से देख लो, मैं इसी स्पेस में, छोटी सी स्पेस में प्रॉब्लम को करूँगा. v इज इक्वल टू u प्लस वी आर लॉन ऑफ mi by mf, राइट. v इक्वल टू u इज 0 प्लस वी आर velocity of the ejection of gases ln of mi divided by mf is mi by 2, half the initial mass. ठीक, half the initial mass. ठीक है ना. Now v equal to vr ln of mi gets cancelled, या 2 जाएगा ऊपर. So answer, this is the answer. So a rocket was launched from the ground. We have neglected gravitation. Gases are being ejected out. It gives the thrust to the rocket upward in the upward direction. And finally, after some time, when its mass has reduced to half the initial mass, we have to find what is this velocity. The velocity is given by this. Provided initial velocity is 0. Initial velocity is 0. चलो थर्ड. अब मैं थर्ड में क्या करूँगा, मैं ग्रेविटेशन को भी लाऊंगा. एक ऐसा प्रॉब्लम बनाऊंगा ताकि ग्रेविटेशन भी इन्वॉल्व हो जाए. तो कुछ ऐसे में बनाऊंगा. एक ऑब्जेक्ट है, रॉकेट तो नहीं, रॉकेट तो कोई ऑब्जेक्ट है. इट इज इजेक्टिंग गैसेस, एट द रेट ऑफ dm by dt. ओके, लेट मी सपोज इट इज k. क्वेश्चन कुछ मैं ऐसे बनाऊंगा. व्हाट इज द कंडीशन so that an object, rocket type, a rocket is too heavy and rocket is designed in such a way as to kill the gravitational field, as to overcome the gravitational field. But here I don't want that gravitational field should be totally killed. It should be there. A small object is launched into the space by ejecting up gases. If you call it rocket, you can call it rocket also.
And I want to find a condition that it hovers in space, it floats in space, it remains in equilibrium in space. It either moves with a constant velocity or is just in rest in space. Such is the ejection of gases and the gravitational force. Ejection of gas will give it upward acceleration, and gravitation will give downward force. It is upward thrust. It is upward thrust. It is upward thrust due to ejection of gases. Due to ejection of gases. Upward thrust due to ejection of gases. So upward thrust should be equal to mg. As simple as that. If the rocket is to hover in space, or it is to float in space, or it is to remain at rest in space, or it is to move with constant velocity even, because constant velocity and rest are equivalent. For constant velocity, net force is 0. So we have this condition. This is thrust due to the ejection of gases, and this mg is the gravitational force downwards, right? So what is this? This is Vr dm by dt. Abhi humne nikala. You can just check from the notes. Is equal to mg, right? It is Vr. It is constant k is equal to mg. The ejection of gases k must be mg gravitational force by Vr. Answer. So this is the condition. K, that is the rate at which the gases are ejected, should be mg, mass of the rocket into acceleration due to gravity, divided by, yes, ejection velocity of the gases with respect to the rocket. That's it. Have a look. So it's always possible that you can make a condition so that the rocket can hover in space. It can remain in equilibrium in space. It can even move with constant velocity in space. This was lecture on rocket equation and its applications. Continue to watch my lectures and subscribe to my channel, Tantra Sir Physics Classes. Lectures will be continuously uploaded on the YouTube channel, and after this I will upload a lecture on problem session with Nazir Tantre. Then I discuss one IIT level problem, how to do in a magic way in half a minute, a heavy IIT level problem, how it is done in half a minute. Don't miss the lectures, continuously watch the lectures. Thank you.